ये है जयपुर, जो कि फेमस है अपने बाजार्स, फोर्ट्स एंड टेम्पल्स के लिए। बट बियॉन्ड इट्स वाइब्रेंट मार्केट एंड हिस्टोरिक लैंडमार्क्स, जयपुर इज रिनाउंड फॉर इट्स यूनिक सिटी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. Designed in 1727 by Maharaja Savai Jai Singh, the city reflects the principles of Vastu Shastra and innovative use of 9 square grid layout. Whenever we talk about designing home in Jaipur, the 9 square grid emerges as the fundamental design principle. The same principle inspired me in 2022 when I designed the 9 square grid house. इस घर के अंदर मैंने सिंपल ज्योमेट्री, बॉक्स प्रोपोर्शंस और सिमेट्री का इस्तेमाल किया है. The house is essentially designed as a cube with the entire structure adhering to the square layout. While designing this house, I was inspired by the concept of Villa Rotunda, designed by Andrea Palladio in 1500. In the Villa Rotunda, Palladio utilizes the 9 square grid and a symmetrical plan, transferring the central grid into a circle. Similarly, in this house plan, instead of a square in the center, I opted for the circle. इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सर्कल ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है इस घर का. This house measures 50 feet by 65 feet, totaling of somewhere around 3,200 square feet. Designed for a Jaipur family of 6, a husband and a wife, their 2 children and the grandparents. घर की रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल थी. प्लानिंग शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंटरकनेक्टेड स्पेसेस. Plus, being in a corner plot, the house needed to present a grand elevation on both sides. With these requirements in mind, I crafted a design inspired by Jaipur city planning. The house is completely symmetrical, with the entrance located at the corner. For the design, I incorporated views of the garden as well as the surrounding area. Inside, the house features deep balconies to protect it from the direct sunlight. It is very essential for the Jaipur's harsh climate. यहाँ की गर्मी बहुत तेज होती है, so these deep balconies and stone cladding are crucial for shielding the house from the direct sun rays. Additionally, a terrace garden is designed for the roof to provide a green, cool retreat. Now let's explore the planning of this house. इस घर को डिज़ाइन करते हुए मैंने 9 स्क्वायर ग्रिड कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, जो कि जयपुर सिटी की प्लानिंग से इंस्पायर्ड था. The central part of the house features a circular space, drawing inspiration from the Villa Rotunda. और एक और इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल था कि घर एक सिमेट्री को फॉलो करे, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि फ्यूचर के अंदर वो इस घर को 2 हिस्सों में बांट सके, दोनों बेटों के नाम. आई यूज दिस एज अ डिज़ाइन कंसेप्ट और इस घर को मैंने सिमेट्रिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. लेट्स ब्रेक डाउन द फ्लोर प्लान. The house sits on a rectangular plot, and while designing it, I laid out the spaces using the 9 square grid. ग्राउंड फ्लोर पर ये ग्रिड समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी. The entrance of the house is from this corner side. As you enter, you welcome by the spacious drawing area, measuring 20 feet by 18 feet, creating a grand sitting space inside. Attached to this is the living area, which I designed in the circular shape. ये सर्कुलर लिविंग एरिया गार्डन का व्यू लेता है, and it is connected to the house through a series of staircases, adding a unique level difference and depth in the house layout. The living area and the drawing area both connected to the kitchen, which also has a service entrance and views towards the east. किचन के साथ अटैच है डाइनिंग एरिया एंड द पाउडर रूम. ऑन द ग्राउंड फ्लोर देयर आर 2 bedrooms, one for the grandparents and one for the guest bedroom, and they are facing towards the front garden. Each bedroom has attached toilet, ensuring comfort and privacy. Now let's move to the most interesting part of the house, the central circular staircase. ये स्टेयरकेस सेंट्रल कटआउट से होते हुए फर्स्ट फ्लोर तक जाती है. द 9 स्क्वायर ग्रिड कंसेप्ट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर. सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप था इस पूरे घर को 9 हिस्सों में डिवाइड कर देना, क्योंकि ये घर एक रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी वजह से इसके सेंट्रल ग्रिड को इलेबोरेट कर दिया गया है, क्योंकि क्लाइंट पूरे स्क्वायर शेप को बनाने के लिए अपनी स्पेस को वेस्ट नहीं करना चाहता था. सो आई एक्सपेंडेड दीज 2 grids एंड डिजाइन द सेंट्रल ग्रिड एज अ सर्कल, ensuring the house remains connected to the central cutout. On the first floor, 4 bedrooms are strategically placed in each corner, each with its own bathroom. और जो 2 बॉक्सेस बच गए हैं उसमें मैंने डिज़ाइन किया था ईस्ट साइड के अंदर पूजा रूम एंड वेस्ट साइड के अंदर लाइब्रेरी कम स्मॉल ऑफिस. These spaces are also visible from the ground floor thanks to the central cutout, adding a sense of openness and grandeur to the house. The house is designed with the cross ventilation and passive cooling techniques, making it energy efficient and comfortable throughout the year. Now the important question is how you can apply these principles into your home. सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल है कंटेक्स्ट को समझना. इस घर को डिज़ाइन करते हुए मैंने 9 स्क्वायर ग्रिड का इस्तेमाल किया है, जो कि जयपुर के कंटेक्स्ट में परफेक्टली फिट होता है. द सेकंड की डिज़ाइन प्रिंसिपल इज कनेक्टिंग ऑल स्पेसेस थ्रू अ सेंट्रल एरिया टू एनहेंस द नेचुरल वेंटिलेशन एंड लाइट. The third principle is to keep the planning simple and spaces symmetrical, which not only enhances the aesthetic but also the functionality. If you are looking to design your home or understanding how architecture works, consider these principles into your design. I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit the like button. Subscribe to the channel for more such videos. और इस तरह का एक और नया घर समझने के लिए यहाँ पर क्लिक करें.